So overall हम लोग का precipitate looks like this. Okay. This is your calcium hydroxide, white precipitate. ये हो गया green, dirty green precipitate, that is your ferrous hydroxide. This is your reddish brown precipitate, ferric hydroxide. And here we have zinc hydroxide, white gelatinous precipitate. This is your chalky white precipitate, ये हो गया lead hydroxide. And here we have blue precipitate, ये हो गया copper hydroxide. So action of ammonium hydroxide and sodium hydroxide. So on the left hand side, इधर पे लिया है, we have taken test tube and we have filled it with salt. इधर पे salt डाला हुआ है, इधर पे solution है. Same thing here, same salts. और क्या क्या salt है? So first test tube, here we have calcium chloride. So this is how calcium chloride looks. This is your calcium chloride salt. और सेकेंड टेस्ट ट्यूब में फेरस सल्फेट, ये फेरस सल्फेट है और फेरस सल्फेट का कलर ग्रीन, ये हो गया फेरस सल्फेट. और थर्ड टेस्ट ट्यूब में आयरन 3 क्लोराइड लिया हुआ है, उसका सोल्यूशन, दैट इज योर सोल्यूशन. और इधर पे फोर्थ टेस्ट ट्यूब में, फोर्थ में लिया हुआ है जिंक सल्फेट. सो जिंक सल्फेट इज ऑल्सो कलरलेस. इधर पे सॉल्ट देख सकते हैं आप लोग, क्रिस्टल. दिस इज योर जिंक सल्फेट. Then we have taken lead 2 chloride and this is your lead 2 chloride. This is how it looks. And finally, last test tube में we have taken copper sulfate. This is how it looks. अब क्या करेंगे हम लोग? We will take the salt and we are going to mix with water and make a solution. Now we have already made the solution of those salts by adding water. Okay, we have already made it. अब दिखाएंगे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या होगा. So first we will take calcium chloride का solution. We can take calcium nitrate भी. So here we will take sodium hydroxide और ड्रॉप वाइज ऐड करेंगे इधर पे. ओके, लाइक यू कैन सी हियर, इधर पे वाइट कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ है. सो ये हो गया तुम्हारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. ये वाइट कलर का प्रेसिपिटेट, दिस इज ए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, वाइट पीपीटी. और ये होता है इनसॉल्युबल, एक्सेस डालोगे तो डिसॉल्व नहीं होगा. नाउ नेक्स्ट वी विल टेक calcium chloride and react this with ammonium hydroxide dropwise. If you add ammonium hydroxide, you will not notice any changes. So ammonium hydroxide के साथ कोई भी calcium salt, calcium nitrate or calcium chloride does not react. So no visible reaction. Next we are going to take ferrous sulfate. Ferrous sulfate we are going to check with ammonium hydroxide. So we are cleaning it up. First let us add sodium hydroxide. So we will take sodium hydroxide and we will see what happens. As you can see, a precipitate is formed here. और ये प्रेसिपिटेट होता है डर्टी ग्रीन. ये हो गया डर्टी ग्रीन प्रेसिपिटेट. ये है तुम्हारा फेरस हाइड्रोक्साइड, दैट इज अ डर्टी ग्रीन. और लेट्स यूज सेम सॉल्ट फेरस सल्फेट और इसमें हम ऐड करेंगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड. So let's see what happens when we add ammonium hydroxide.
Okay, as you can see, with ammonium hydroxide also it produces green precipitate. मतलब ये हो गया आपका ferrous hydroxide which is your dirty green precipitate. और इसमें और डालोगे तो ये डिजोल्व नहीं होता है ये प्रेसिपिटेट, सो इनसॉल्युबल होता है एक्सेस में डालोगे तो. अब थर्ड में लेंगे हम फेरिक क्लोराइड. सो फेरिक क्लोराइड में पहले ऐड करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड. सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस. बाय द वे वी आर क्लीनिंग इट अप. सो हियर वी विल यूज ड्रॉप वाइज. Okay, you can see a precipitate is getting formed and it looks reddish brown in color. ये हो गया आपका reddish brown precipitate बोलते हैं इसको. So this reddish brown precipitate is ferric hydroxide, FeOH whole 3. और ज़्यादा डालोगे तो dissolve नहीं होगा precipitate. So that's why this is insoluble. इनसॉल्युबल होता है. सो लेट अस ऐड मोर सोडियम हाइड्रोक्साइड. डिजोल्व ही नहीं होता है ये प्रेसिपिटेट. देखिए, सो ये हो गया आपका रेड कलर, रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट बोलते हैं इसको. नाउ वी विल टेक सेम फेरिक क्लोराइड एंड वी आर गोइंग टू ऐड अमोनियम हाइड्रोक्साइड इसमें. So when we add ammonium hydroxide, this also produces reddish brown precipitate. So ये भी हो गया आपका ferric hydroxide. इधर पे reddish brown precipitate फॉर्म हुआ है. Now next में लेंगे हम zinc sulfate solution. So this is your zinc sulfate solution and here we are going to add sodium hydroxide. So what happens when we add sodium hydroxide? देखते हैं कि कलर क्या होगा इसका प्रेसिपिटेट का. So we have to tilt or drop wise. Okay, as you can see precipitate form हो रहा है इधर पे. Precipitate is getting formed. Okay, yes. Now we have zinc का precipitate form हुआ है, zinc hydroxide. This is your precipitate. Looks white and we call it white gelatinous precipitate. इसको बोलते हैं white gelatinous precipitate. Now next we will take zinc sulfate, but this time we will react with ammonium hydroxide. So ammonium hydroxide के साथ क्या होता है? Let's see. Okay, with ammonium hydroxide also we will notice it forms a white gelatinous precipitate. इसको बोलते हैं white gelatinous precipitate. This is how it looks, gelatinous. ये हो गया आपका zinc hydroxide. Now, if we add excess ammonium hydroxide तो क्या होगा? ये precipitate dissolve होगा कि नहीं होगा? तो वो देखते. So इधर पे excess डाल रहे हैं हम लोग. आप देख सकते हैं कि ये dissolve होने लगा है. So when we add excess, this starts to dissolve. As you can see, this is dissolving. In excess ammonium hydroxide, it dissolve हो जाता है. Same thing with this precipitate. If we add excess sodium hydroxide, this precipitate also dissolves. Now next we will take lead chloride. Lead chloride है, lead का charge है 2. So ये हो गया salt. We have dissolved it. We can take lead nitrate also, or we can take lead chloride, any salt which contains lead, Pb2+. Okay. अब इधर पे ऐड करेंगे हम लोग sodium hydroxide. So when we add sodium hydroxide, let's see what color precipitate does it form. So precipitate form हो रहा है इधर पे. As you can notice, इधर पे precipitate बना हुआ है white. इसको बोलते हैं हम chalky white precipitate. This is how it looks. Chalky white precipitate बनता है. Now let us take same salt, that is your lead chloride. थोड़ा mix कर देते हैं इसको. Now we will add ammonium hydroxide. Okay, as you can see with ammonium hydroxide, it is also forming a white precipitate.
और ये प्रेसिपिटेट को बोलते हैं हम chalky white. This is how it looks. ये हो गया आपका chalky white. If we add excess ammonium hydroxide तो ये precipitate dissolve नहीं होता है. But whereas जो precipitate है ये lead का lead hydroxide chalky white, इसमें if we add more sodium hydroxide तो this precipitate also dissolves. ये भी घुल जाएगा. As you can see, this starts to dissolve. If we add excess sodium hydroxide, it becomes soluble. Now next we are going to take copper sulfate. Copper sulfate में sodium hydroxide. So what happens when we add sodium hydroxide in copper sulfate? So we will use dropwise. As you can see, it is forming a blue precipitate. We can say a pale blue precipitate is formed. Now when we add excess sodium hydroxide, ज़्यादा डालेंगे तो this does not dissolve. So ये हो गया आपका pale blue precipitate. Similarly, copper sulfate को let's react with ammonium hydroxide. Dropwise. इधर पे you will notice this also produces a pale blue precipitate. Now let us check whether this pale blue precipitate is soluble in excess ammonium hydroxide. So when we add more dropwise, excess में डाल देते हैं कि ये precipitate dissolve होता है कि नहीं होता है. अभी भी precipitate form हो रहा है. Okay, this is a precipitate. Now you can see it is dissolving. So मतलब ये dissolve होता है. ज़्यादा ammonium hydroxide डालेंगे तो dissolve हो जाता है. So excess में these are your soluble. देखिए, this is how it dissolves. The precipitate slowly starts to dissolve in excess ammonium hydroxide.